घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल महल सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल महल सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल महल सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmahalgroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल महल सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल महल सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल महल सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmahalgroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल महल सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका
जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल। Hello, Assalamu alaikum, and welcome to this live telecast of Gulmohar City presents Youth Friendship League. Sumya Gladiators and Mashal Plastic Tigers will be facing each other tonight in game number 12 here at TMC Cricket Ground. Earlier, Mashal Plastic Tigers won the toss and they have decided to bowl first. Mustafa Musa will be taking the new ball from the Masjid end. Earlier, we have seen chasing was pretty difficult in this tournament, but the result of the last game must have influenced the captain of Mashal Tigers to elect to bowl first. First delivery coming up. Nicely outside, played on the offside. The fielder at point cut that one off. No run taken. So Sumya Gladiators playing their final match of this tournament. They are lying at the bottom of the points table with just 1 point. That too came with a tie when they played against Burj Builder Hawks. Whereas Mashal Plastic Tigers are resting at the top second position in the points table. Mustafa Musa is going to continue. Nicely brought the ball back into the pads. Good run taken in the end. Mustafa Musa coming up fresh from his deadly lethal spell of fast bowling against NJS Chargers, where he picked up 6 wickets inside batting power play. He was also adjudged man of the match for his wonderful bowling performance. First run came off the bat. Ibrahim Salim is off the mark. Haris Altaf is going to be on strike. He's taking guard. Good decision by the bowling side skipper. First slip in position. He knows Mustafa Musa is very much capable of moving the ball away from the right-handed batsman, so he'll be looking for an outside edge. Short delivery pulled away. Has gone over the head of the wicket keeper. And it will be the first boundary to Mashal Sumya Gladiators. Mustafa Musa bowling it short. The batsman went for that hook shot, top edge that over the head of the wicket keeper, and there was no chance for the fielder at fine leg to cut that one off. So good start this from Sumya Gladiators.
Haris Altaf's getting the boundary of the first ball that he faced. The third man is outside the 30-yard circle. All the fielder on the offside are inside the circle. This time again, giving himself room. Play towards the onside. The fielder at mid-on is after it. Just a single. So the intentions are pretty clear from Sumya Gladiators. They're not going to go down without fighting. They will be looking to utilize this batting power play by scoring as many runs as possible. Mustafa Musa has been bowling it short so far. Nicely played on the onside to the mid-on fielder. No run taken. We haven't seen much swing from Mustafa tonight in this first over. The second ball came back into the batsman, which hit the pads. Apart from that, there hasn't been no swing. The ball is coming onto the bat beautifully. There you go again, the ball again going down the leg side. Huge appeal from the bowler, but no decision taken by the umpire. So after the end of the first over, Sumya Gladiators are 6 without a wicket. डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और Mashal is going to share the new ball from the opposite end. Ibrahim Salim on strike. Bowled him. First ball coming back into the batsman, and he had no clue where the ball was going. The ball crashed into the middle stump. First ball wicket to Noman Chawla. Earlier we were mentioning how Mustafa Musa wasn't getting the ball to swing, but this first ball came back inside miles into the batsman, and the batsman had no clue. He wasn't expecting that much swing of the very first ball. So Sumya Gladiators have lost their first wicket. And Ibrahim Salim has been dismissed for just a single. I beg your pardon, the batsman dismissed is Haris Altaf for 5. And Sumya Gladiators are 6 for 1. किस जमानत है? गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करना। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए
हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के The left-hander Alam Bhimani is the new batsman in. What a ball this one was from Noman Chawla, coming back into the batsman, and batsman had no clue. He wasn't expecting the ball to swing that much, especially when he saw the previous over where Mustafa Musa couldn't get that much swing. Great start this from Noman Chawla. The field will be changed for the left-handed batsman. Third man has gone to the boundary. Here is Alam Bhimani facing his first delivery. And his wides outside the off stump. He went for that big booming drive, completely missed that. We were talking about the toss earlier. We saw in the previous matches when the captain won the toss, they decided to bat first because chasing was pretty difficult, proving to be very difficult. But the result of the last game where Classic Garments chased down the target of 159 in just 14 overs must have influenced the captain tonight. There you go, another good delivery, moving away from the left-hander. Noman Chawla so far hasn't conceded a single run in this over. Picked up a wicket of his very first delivery. There's a fielder at first slip waiting for that outside edge. Again, has he got an outside edge? Big appeal from the bowler and the wicketkeeper, but the umpire is unmoved. The batsman was advancing down to track, looking for that expensive drive on the offside. The fielding side thought there might have been an outside edge, but the appeal was turned down by the umpire. So Alam Bhimani is straight away under extreme pressure. This time defended on the onside. No run taken. Fielders are pretty pumped up. They know they are just one step away from qualifying into the finals. Whereas Sumya Gladiators know it's their last game. And only a miracle can make them qualify for the next stage. Last ball of the over coming up. Again going for that big drive on the onside, missing it altogether. So a maiden to start off with by Noman Chawla. 2 overs gone. Sumya Gladiators are 6 for 1. सेहतमंद जिंदगी हो जहां आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट और Mustafa Musa is going to continue with his second over from the masjid end. Ibrahim Salim is on strike. He has only faced 4 deliveries so far. Has scored just 1 run. This time again, ball moving away from the right-hander. Almost got an outside edge on this occasion as well. We saw the captain of the fielding side position his fielder at the first slip position. Another fielder has been added on the offside to prevent the boundary. I still believe when you're in the batting power play, you can have a fielder at the first slips, especially when the bowler is moving it away. Again, it's outside edge and taken at the point position. Second wicket down for Sumya Gladiators. It's first wicket for Mustafa Musa.
Again, the ball was full and it was moving away. The batsman went to play the aerial drive on the offside and the fielder was waiting for that easy catch. So 2 wickets down now, Sumya Gladiators. Ibrahim Salim, the latest batsman to be dismissed. The score remains 6-2. ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन। So 2 wickets down, Sumya Gladiators. With that wicket, Mustafa Musa has now become the joint highest wicket taker in this tournament. Again, it was full and it was into the pads. The batsman got the bat down at the right time. Otherwise, that would have been given out LBW. Mustafa Musa has certainly found his length in this over. He was pretty short in the previous over, where he wasn't getting much swing. But in this over, he has kept the ball full and moved the ball away from the right-handed batsman. Even the previous ball was moving away. The batsman went to play that booming drive on the offside. And it was taken easily by the fielder at the point position. So what a start this is from Mashal Plastic Tigers. मुस्तकबिल का मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो। Mohammad Mavia was the new batsman in. He got off the mark for the very first ball that he faced. Alam Bhimani now is on strike. He couldn't get bat onto the ball in the previous over from Noman Chawla, where the ball was moving away from him. This time getting a leading edge. Will get just a single down to third man. In fact, the batsmen have come for the second run as well. Good running this. Mustafa Musa will be looking to bring the ball back into the left-handed batsman. Good start this from Mashal Plastic Tigers. They are maintaining this pressure on the batting side. This time pulled away. Found the gap between the mid-wicket and mid-on in fact. And he's going to run away for the boundary. Good shot this from the batsman, Alam Bhimani. Again, whenever we have seen Mustafa Musa bowling it short, he has given ample time for the batsman to play those horizontal bat shots. And this time Alam Bhimani was waiting for that length. It wasn't a risky shot. He made sure that the ball stayed all along the carpet. He found the gap between the mid-wicket and long mid-on, and the ball just raced away across the outfield. Last ball of the over coming up. This time driven on the offside. The fielder extra cover position is going to cut that one off. No run taken. So 3 overs gone. Sumya Gladiators are 13 for 2. हाँ, आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों, तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स,
Noman Chawla is going to continue from the opposite end now to Mohammad Maavia. Good start there so far from Mashal Plastic Tigers. They have picked up 2 wickets inside the batting power play. Again, the ball coming back in. Played down the leg side. The fielder at fine leg was inside the circle, and this is going to run away for a boundary. Noman Chawla continues to bring the ball back into the batsman, and the fielder at fine leg was inside the circle. All he needed was to get a bit of bat on it, and that's 3 boundaries so far to Sumya Gladiators. Still the 4th over in the batting power play. Third man is at the boundary. Again, the ball moving away. Not enough bounce on this pitch. The batter at the non-striking end is having a word with Alam Bhimani. The mid-wicket fielder is outside the 30-yard circle. No one in the deep on the offside though. Noman Chawla charging in. This time getting an outside edge, and it's going over the head of the first slip fielder. The third man won't cut that one off. So second boundary of the over. Again, Alam Bhimani was looking to play that expensive shot on the onside, got that leading edge, and the fielder at third man position was pretty square. So second boundary in this over to Sumya Gladiators. They have lost 2 wickets so far, but their intentions are pretty clear. The first slip has now gone deep. The third man has been moved finer. Again, played towards the mid-off fielder. Almost carried to him. Could have been a second wicket for Noman Chawla. Nine runs of coming in this over so far. Still 1 ball to go. Alam Bhimani is batting on 10. Mohammad Maavia so far has scored 6 of just 3 balls that he has faced. This time again getting a leading edge and just over the head of the cover fielder. The fielder at point position is after it. He'll cut that one off. 2 runs taken. In fact, they are going back for 3. Good piece of running this from the batsman. There you see the ball again moving away. He was looking to play it on the onside. Got that leading edge. The fielder at cover position jumped, but he couldn't get hand onto it. Not a good throw. That one was from the fielder. And the batsman meanwhile completed 3 runs. So 4 overs gone. Sumya Gladiators are 25 for 2. ख्वाब को अब हकीकत बनाएगा। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की Mustafa Musa is going to continue with his 3rd over from the masjid end. Again, he's moving the third man fielder a little finer. He knows Alam Bhimani is looking to play those aerial shots, so meanwhile he can get an outside edge and ball can run away to the boundary at third man position. So he wants that area covered up. There, as I mentioned, he got an outside edge, and will the fielder cut that one off? Yes, just a single. Again, it was a full toss. Mustafa Musa was looking for that swing, couldn't get it on that occasion. And just because he moved a bit fine at the third man, it was just a single.
Mohammad Mavia now is on strike. He's taking a look at the fielding positions. This time played towards mid-on. Just a single. So Mustafa Musa so far has picked up 7 wickets in this tournament. He's the joint highest wicket taker. We saw his lethal spell of fast bowling in the previous match against NJS Charger when he picked up 6 wickets. And in that process, he also picked up a hat-trick, the first of this tournament. Third ball of the over coming up. This time bowling it slower. The batsman played it towards the bowler. He was deceived by the length and pace of that delivery. Almost carried to the bowler. Slight smile from the bowler on that occasion. Good clever thinking this from the bowler. This time bowling at full and he has bowled him. Beautiful delivery this from Mustafa Musa. Previous one was pretty slower. This one was a fast in swinging. The batsman must have got an inside edge and the ball just went on to kiss the off stump. There we see the ball getting hit the inside edge. It hit its pad and then clipping the top of off. So with that, Mustafa Musa has now picked up his 2nd wicket. And Sumya Gladiators have now lost their 3rd wicket. They are 27 for 3. The latest batsman dismissed is Alam Bhimani for just 14 runs. शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। Yunus Thai has now joined Mohammad Mavia out there at the center. Mustafa Musa picking up his 2nd wicket of his previous delivery, also moving up at the top of the ladder of the highest wicket taker in this tournament with 8 wickets so far. He still have 1.5 overs to go in this spell tonight. Can he pick up another? Yunus Thai, it's a full delivery, played towards the onside.
There you see the ball was full into the pads. If the batsman would have missed, it would have crashed into the pads and would have been an easy decision for the umpire. Last ball of the over coming up good over this so far from Mustafa. Good disciplined bowling effort this from Mashal Plastic Tigers. Again, crashing it on the offside. Couldn't find the gap on that occasion. Good fielding by the fielder at extra cover, as appreciated by the fielder at mid-off. So 5 overs has been done. Sumya Gladiators are 27 for 3. प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBC से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप on the trot like Mustafa Musa. And it's a good decision when you see the ball swinging. You need to give more chances to your fast bowler. This time again ball coming back in, play towards the onside. Nice piece of fielding there by the fielder at square leg. Just a single. Good disciplined bowling effort this from Mashal Plastic Tigers so far. They haven't conceded a single extra, which shows that their line and length have been pretty good. Yunus Thai is on strike. Hasn't scored a run so far. He's yet to get off the mark. This time playing it straight, right at the center of mid-off and mid-on. There is a thrower at the keeper's end. The batsman was well inside the crease. So Yunus Thai with that single has gone off the mark. 3 wickets down so far. Sumya Gladiators. It's the last over of the batting power play. Initially they were taking those risks and getting those boundaries, but now the runs have dried up. And rightly so. When you have lost 3 wickets, there is no need of taking extra risks now, if you want to bat deep and put up a decent total on the board. Again, full toss played on the onside. The fielder at the wicket is going to cut that one off. There is a throw at the keeper's end, but the batsman completes the second run. There you see bowling it on the pads full, nicely clipped on the onside. The fielder at deep mid wicket. It was a sharp flat throw, but the keeper couldn't gather it, and the batsman completed two runs meanwhile. So still scoring under 6 runs and over. Sumya Gladiators. Remember, it's their last game in this tournament. They haven't won a single game so far. Can they finish on a high note? This time getting an inside edge, straight to the wicket keeper, no runs. Numan Chawla bowled that one way outside the off stump, was looking to bring the ball back in, but the ball just went straight, got the inside edge and easily collected by the wicket keeper. This time again played towards the onside, just a single. Mohammad Mavia is playing sensibly here. He knows the ball is moving in the air and off the pitch, so playing those horizontal bat shots will be risky. So he's playing it all along the carpet just for singles and twos, ensuring that
won't lose any more wickets. Last ball of the power play coming up now. Again went for that big shot outside the off stump, completely missing that Yunus Thai. So 6 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 32 for 3. Let's look at the batting scorecard. Ibrahim Salim was the first, just went for 1. Haris Altaf was the first batsman to be dismissed. He went for 5, bowled by Noman Chawla. And Alam Bhimani was the latest casualty, bowled by Mustafa Musa for 14 runs. Mohammad Mavia so far is at this for 11 runs, and Yunus Thai has just scored 1 run. That's the bowling card. Mustafa Musa and Noman Chawla both have bowled 3 overs each. Mustafa Musa picking up 2 wickets for 15 runs, and Noman Chawla bowling a maiden and picking up a wicket and conceding 17 runs in his 3 overs. So the batting power play has been done, and there has been a change at the Masjid end. Mustafa Musa has been replaced by Mubashir. Five fielders now can field outside the 30-yard circle, so the spinner has been introduced into the attack. The long off is outside the 30-yard circle, so is long on. There is deep mid-wicket. Mubashir Anwar bowling it full. The batsman playing it straight to mid-on. Long on, in fact. Single taken. We have seen in this tournament the other teams have relied so much on spinners, whereas Mashal Plastic Tigers have got wickets through their fast bowling options. This time went for that booming shot outside the off stump, and it's taken at the cover point position. 4 wickets down, Sumya Gladiators now. The latest batsman being dismissed is Yunus Thai. Again, he was facing his first delivery of the spinner and went for that big shot outside the off stump. There you see it was full, it was slow, and he went for that big booming off drive, and the fielder at point position was waiting for it. He jumped in the air and plucked out of thin air. 4 wickets down now, Sumya Gladiators for 33. Yunus Thai, the latest batsman to be dismissed, or just 1. देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेजी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। So Mubashir Anwar picking up his first wicket of his second delivery in his spell. Again bowling it down the leg side. Wide signal by the umpire. Muzammil Batwa is the new batsman in. This time went for that big outside off stump. Completely missing it. They just lost a wicket in this over. Shouldn't take those risks now. Again went for that same shot. Again missing it. Almost a carbon copy of what happened of the previous delivery. Mubashir Anwar bowling it flat outside the off stump. He's not giving that much air to this new batsman. This time getting an outside edge. The fielder at third man is after it. Will he be able to cut that one off?
Good piece of fielding down at the boundary. Only 2 runs taken on that occasion by the batsman. He was bowling it flat, he was bowling it short. As soon as he bowled fuller, the batsman went for that booming off drive again and got an outside edge. Just 2 runs though. With those couple, Zamil Bartwa got off the mark. The last ball of the over coming up. Play towards the offside. Has that been taken? No, just 1 bounce. So 7 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 36 for 4. क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Community centers. Numan Bari has now replaced Numan Chawla from the opposite end. Slow left arm bowler. Again bowling at full play towards the onside, no run taken. Numan Bari, as we saw, was pretty economical in his previous match against NJS Chargers. He picked up 1 wicket, but he was pretty economical. Went away for just 16 or 17 runs, I think. There you go, again bowling it into the stumps. He's a pretty clever bowler. Doesn't give that much room away to the right-handed batsman. Varies his pace and length accordingly. Sumya Gladiators lost their 4th wicket in the previous over. This time again bowling it fast and short. Played straight to the bowler. No run taken. Pretty slow start this from Sumya Gladiators. We are into the 8th over and they've just scored 36 runs. They've lost 4 wickets in the process though. This time again bowling it on the onside. Bowling it according to his field positions, Numan Bari. No fielder deep on the offside. Between extra cover and long off, just a single. They were easy too. The batter at the non-strikers end is also complaining. They could have easily completed those 2 runs on that occasion. Zamil Bartwa was pretty slow to react. This time again bowling it fast. Straight to the fielder on the offside. So 8 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 37 for 4. Commercial avenues, cafes, restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall और sports complex भी. Luxury high-end apartments, premium villas, state-of-the-art hill resorts और farm houses जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर. गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ. ये सब एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती हैं. सेवन Mubashir Anwar is going to continue. Now he has a slip in place. Good delivery. It just squared the batsman up. It was pitched on leg stump, moved just a bit away. Dot ball to start the over with from Mubashir Anwar.
This time played straight. Slight misfield from the bowler. Will bring just a single though. Good tight bowling this from Mashal Plastic Tigers. They're not giving away any room or that length for batsmen to clear their leg and go for those aerial shots. Hitting ball for the boundaries has been proven very difficult now. This time getting an outside edge. Just a single. Vashiran were cleverly bowling it slower outside the off stump, asking for the batsman to take those risks and go for those big shots. There you go again, bowling it full into the stumps. Clever bowling this from the bowler. This time played straight. Beautiful piece of fielding by the bowler of his own bowling. Diving away to his right, preventing every run that is on offer. Just 2 runs of the over so far. Last ball of the over coming up now. Sumya Gladiators need to move on. This time again played on the offside. No run taken. 9 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 39 for 4. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। Manbari is going to continue with his second over. This time went for that big shot and he has found the gap between the cover and the long off. Absolutely smashed towards the offside for a boundary. Welcome boundary this for Sumya Gladiators. They were blocking up till the previous over. And this time when they got chance, he absolutely smashed it. There was no chance for the fielder at extra cover. The first boundary this from Mil Batwa. Will this boundary break the shackles now for the batting side? The Manbari only conceding 1 run in this previous over. Again hit away on the offside, this time straight to the fielder. Went for a boundary of the previous delivery. We haven't seen many loose balls from the bowling side. This time again went towards the offside, got the leading edge, and this ball will run away for another boundary. So Muzammil Bhatt was ready to take those risks. Earlier in the over, he smashed it on the offside past the extra cover fielder, and in this time again he was looking to play the same shot. Got leading edge outside the off stump, and there was no chance for the short third man fielder to cut that one off. So 2 boundaries in this over so far. Numan Bari will be under some pressure now. The run rate is still under 5 runs in over. This time bowling it down the leg side. Wide signal by the umpire. Overcorrected his line and length on navigation, the bowler. This time again went for that big shot offside the off stump, completely missing that. The bowler now has protection lead on the offside. The cover fielder is standing at the boundary. This time bowling it fast outside the off stump. The batsman had no clue to that delivery. He was looking to play that cut shot outside the off stump, but completely missing the line and length of that delivery. Last ball of the over coming up. Good over this so far. 9 runs have come of it. Still 1 more ball to go. Again played towards the offside. Good piece of fielding that by the fielder at cover position. Just a single.
So 10 runs coming of the last over from Noman Bari. 10 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 49 for 4. Let's look at the batting scorecard. Haris Altaf was the first batsman to be dismissed for 5. Ibrahim Salim then went for just 1 run. Alam Bhimani was bowled by Mustafa Musa again for just 14. Mohammad Mavia still on the crease for 14. Yunus Tai was dismissed by Mubashir Anwar in his very first over. The new batsman Muzammil Bartwa got those 2 boundaries in previous over and he's looking settled for 12. Mustafa Musa has bowled 3 overs so far. 2 overs have been bowled by Mubashir Anwar. Noman Chawla also has bowled 3 overs. And Noman Bari hasn't picked up a wicket so far. www.gulmohargroup.com.pk महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Afan has replaced Mubashir from the bowling end, Masjid end in fact, and has picked up a wicket straight away of his very first delivery. The batsman again was looking to play that big shot of his very first delivery and completely yoked himself. And the ball just went on to hit those middle and like stump. What a start this from the bowler. Sumya Gladiators are now 5 down. डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए, जहां So Afan picking up his first wicket of his very first delivery in his spell. Sumya Gladiators with that lost their fifth wicket. This time again bowling it into the stumps. Nicely defended by Hamza Altaf, who is the new batsman in. Afan Imran, slow left arm bowler, bowling wicket to wicket, almost picking up another wicket. The batsman moving away. This time again went for that big shot. Has he timed that well? Yes, it has gone over the head of the log-on fielder. We'll have to check whether it has crossed the boundary or is it a 6. Again, it was a loopy delivery and the batsman was waiting for that land. He absolutely smashed it over long on. And yes, it crossed the boundary.
So first 6 of the innings. This time again went for another big shot, another 6. In fact, that has gone out of the ground. Top shot this from the batsman. So 2 consecutive 6s coming off this over now. Hamza Altaf has got his eye in. This time it was over mid-wicket position. So Afan Imran, after picking up his wicket in his very first delivery, has now been struck for 2 consecutive 6s from Hamza Altaf. Last ball of the over coming up. This time again went for that shot outside the off stump. Nicely fielded by the fielder, third man. No run taken though. In fact, a single has been taken. 11 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 62 for 5. मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। We saw 2 consecutive 6s being hit in the last over from Afan Imran. Hamza Altaf smacking them over long on fielder. Noman Bari is going to continue with his 3rd over from the opposite end. He was pretty expensive in his previous over as well. This time bowling it fast into the stumps. Nicely defended by Hamza Altaf. The run rate improved in the last over. Now just under 6 runs and over. This time again bowling it flat outside the off stump. So he's mixing his length, Noman Bari. Making the batsman guessing of what's coming next. Hamza Altaf's intentions have been pretty clear. He won't hold himself back. He will go for those big shots. This time again coming down the track. Has he timed that well? No, it will go straight to the long on fielder. Just a single. Mohammad Mavia now is on strike. Change of attack. Bowling over the wicket now. Played on the offside. The fielder at long on is charging towards the ball. Good aggressive fielding. Just 1 run. Hamza Altaf signaling to the batter at the opposite end that he wants to stay at the crease. He wants to take as much strike as possible. The fielder at fine leg is inside the circle and pretty fine, very close to the wicket keeper. This time bowled down the leg side and single also taken, so 2 runs will be added to the total. Wide signal by the umpire. Bowling over the wicket to Mohammad Mavia. The bowler Noman Bari. Bowling his 3rd over, so far has conceded 15 runs. This time nicely played on the offside. The fielder at extra cover position was pretty sharp. Didn't allow batsmen to go for those single. Last ball of the over coming up now. Mohammad Mavia is pretty happy to play the waiting game, whereas Hamza Altaf is looking for those big shots. This time again easily defended to the fielder at mid-wicket. So 12 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 66 for 5. सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो,
जहाँ की फिजा में ताजगी का एहसास हो, ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद जिंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और So Afan Imran has been straight away taken off the attack after he went for 2 consecutive sixes in previous over. Mubashir Anwar now replaced him. Play towards the onside, and it has gone over the head of the long on fielder. It was a simple catch and he has dropped it. Hamza Altaf continuing to play those big shots. 4 signal by the umpire. This time again was looking to hit on the onside over the head of the long on fielder, and it was a simple catch. In fact, the ball just hit his hands and went over the boundary. Again, looking for that big shot down to long off. Just a single though. Hamza Altaf so far has scored 18 runs at a strike rate of 200. Run rate improving every time whenever Hamza Altaf is on strike. This time Mohammad Mavia also played that aggressive shot down to long on. So nice little partnership building up between these two batsmen. And that's exactly what the Sumya Gladiators need right now. They'll be looking to post a decent total to challenge the bowling side. This time played on the onside. Another 6. Hamza Altaf has got his eye in now. This time it was on the patch and he slog swept that over square leg position. It almost came towards the commentary box. So third 6 now this for Hamza Altaf in his innings. This time again coming down the track and he has been stumped. One shot too many by the batsman. When you have got a 6 and a boundary of previous deliveries, there was absolutely no need to play that shot. Mubashir never gave it a bit of air. The batsman came down the track and completely missed that. Sharp stumping this from the wicketkeeper. Sumya Gladiators now have lost their 6th wicket for 78. Hamza Altaf, the latest batsman to be dismissed. He goes after scoring 25 runs of just 12 balls, hitting those 3 max of 6s. 78 for 6 now, Sumya Gladiators. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट। So Mubashir Anwar picking up his 2nd wicket of previous delivery. Mohammad Bilal is the new batsman in. Tried to guide it down to third man, missing it. 13 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 78 for 6. महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर।
जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Change in the bowling attack from the opposite end now. Shayan Khalid is replacing Numan Bari. Numan Bari has bowled out his 3 overs so far. Haris Altaf was the batsman dismissed in the previous over. They were going so well up till that point, Sumya Gladiators. This time played towards long off. Will the batsman come back for the second run? No. Good piece of fielding down there at long off. Hamza Altaf already hit a boundary and 6 in the previous over, and he again went for that aggressive shot, came down the track and completely missing that ball. The keeper was sharp enough in that stumping. Mohammad Bilal, the new batsman, is on strike now. This time again tried to guide it on the offside. Dot ball. So run rate is just under 6 runs and over now. Still more than 6 overs remaining in this innings. Can they score 120 or 130? Play to the point fielder for a single. Mohammad Mustafa Musa cutting that one off. Mohammad Mavia is now on strike. This time again played down to long off. Just a single. Good sensible batting this from Mohammad Mavia. He knows he needs to stay there till the end. And he wants the batsman to give him ample support so that they can score good total. Again, way outside the off stump. There has been appeal for stumping. It has been turned down by the umpire on the leg side. There you see. The batsman was continuously moving inside the crease. The keeper spotted the chance, took the bails off, but the umpire turned down the appeal. Would have been 7 wickets down, Sumya Gladiators. This time again guided down to third man. Just a single. Dot delivery in fact. So 14 overs have been bowled. Sumya Gladiators are now 81 for 6. की बुकिंग करवाइए, एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। Mubashir Anwar is going to continue from the masjid end. He's going to bowl out his spell. So far has picked up 2 wickets for just 18 runs. This time played on the offside, and that has crossed the boundary. It is first ball 6. It was a loose delivery from Mubashir Anwar. It was full. It was a full toss on the pads, but batsman was waiting for it. Swept it over the square leg fielder, and there was no chance for the ball to stay inside the field. This time again went for another big shot. Has he found the gap on that occasion as well? No, just a single though. So Mohammad Mavia has now got his eye in. He knows just 6 overs are remaining, and they still need to post a decent total on the board. The run rate is now over 6 runs and over. Not much batting to come after these two batsmen.
Mohammad Bilal playing it on the offside. Easy single taken. Good batting this from Mohammad Bilal. Bringing Mohammad Maavia on strike. This time again went for that big booming drive on the offside, and he has found the gap. This will be another boundary for Mohammad Maavia. Again, Mubashir Ramla bowling it outside the off stump, bowling it full, and it was beautifully driven past long off fielder. So a 6 and a 4 in this over from Mubashir Anwar so far. His figures were looking pretty respectable up till this over. This time again getting outside edge, and it will run away for another 4. 2 consecutive boundaries now. Yes, the fielder couldn't cut that one off. Sensible batting this from Mohammad Maavia. The bowler bowled it wide outside the off stump, shorter in length. The batsman was waiting for it, played it off the back foot, got outside edge, and the fielder at third man was after it. But the ball won the race in the end. So very productive over this for Sumya Gladiators now. Last ball of the over coming up. Mubashir Ramla has been very expensive in this over. This time again, it was a full toss. Nicely played down to long on. So 15 overs have been bowled. Sumya Gladiators are now 98 for 6. Let's look at a batting scorecard. Haris Altaf was the first batsman to be dismissed for 5. Then the next batsman to go was Ibrahim Salim. Alam Bhimani also just scoring 14 runs. Mohammad Maavia coming at number 4 is still on the crease. Yunus Tai also just scoring 1 run. Muzammil Bantwa just went for just 12. Hamza Altaf, after hitting those 3 massive sixes, went for 25 of just 12 ball. The bowling effort has been pretty decent so far. Mustafa Musa picking up those early 2 wickets in his 3 overs. Noman Chawla also picking up a wicket in his first over. Mubashir Anwar has been bowled out. He was pretty expensive in his last over, but he also picked up 2 wickets. Noman Bari was wicketless. Afan Imran picking up a wicket, was very expensive in his very first over. Shayan Khalid is going to continue. Play towards the offside. The batsmen are coming back for the second run. Good piece of running this from the batsman. And with those 2, 100 comes up now for Sumya Gladiators. Pretty crucial last 5 overs these for the batting side. If Mohammad Maavia will stay at the crease, 150 is definitely on. This time played that straight to mid-wicket. Just a single. Mohammad Bilal is now back on strike. Mohammad Maavia has calculated his innings beautifully now. He's striking at over 100 runs a ball. The run rate always improving. This time played straight. The bowler got his leg in but couldn't stop the ball. Mohammad Maavia batting on 37 of just 32 deliveries. Scored 2 boundaries and a massive 6 in previous over. This time nicely defended to the bowler. Good fielding of his own bowling by Shayan Khalid. This time again sweeping it and finding the gap between the mid-wicket and long on. And this will be another boundary. Poor fielding effort this deep on the onside. Again, Mohammad Maavia has been absolutely lethal on any length that has been full. He slog swapped that. First he crossed the fielder inside the circle, then there was a dive from the fielder at deep mid-wicket, but he couldn't stop the ball. So Mohammad Maavia moving into the 40s with that 4. Last ball of the over coming up from Shayan Khalid. Again playing it on the offside. Slight misfield but no run taken. So 16 overs have been bowled. Sumya Gladiators are slowly moving along. 106 for 6. एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल।
कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड। So Mustafa Musa is now back into the attack to finish off his spell. Nicely played on the offside, just a single. Mustafa has kept long on and long off, both at the deep at the boundary, so he'll be looking to bowl full and into the stumps. The fielder at cover is on the offside, outside the 30-yard circle. Square leg is inside, deep mid wicket is outside as well. This time bowling it short, mistimes it, but this will land safely between the fielders, and 2 runs will be taken meanwhile. Good piece of running by the 2 batsmen out there. Mustafa Musa completely surprising the batsman with that length. Mohammad Mawia was looking to play that hook shot, caught the leading edge and just landing between the fielders. So he'll be considering himself very lucky, Mohammad Mawia. This time bowling it full, smash down the ground. The long off fielder will cut that one off. Another 2 runs added to the total. Good running by the batsman. This time it was slower, it was fuller. The batsman absolutely smashed over the head of the umpire. And in the end, running for those 2 runs. Crucially, Mohammad Mawia is back on strike. He's on 45 now of just 37 deliveries. This time again bowling it slower, hitting it off the offside. The fielder long off will cut that one off. Another couple added to the total. Good piece of timing on that occasion, that from the batsman. Just couldn't find the gap. He got the elevation, not the distance. This time bowling down the leg side, wide, signal by the umpire. Mustafa Musa bowling his last over now. Pretty decent spell this from Mustafa. Picked up 6-wicket haul in the previous game against NJS Chargers, and even tonight picking up 2 top order batsmen inside the batting power play. Again it was slower, played on the offside. Has he found the gap? The mid-wicket fielder, he won't cut that one off. Another boundary to Mohammad Mawia, and with that 4, he also brings up his half century.
Again, Mustafa Musa was trying to surprise the batsman with the slowness of his ball. Mohammad Mavia was waiting for it, found the gap on the offside. The fielder at mid-wicket was after it, but he gave up the chase when he saw the ball moving away to the boundary. Very good innings this from Mohammad Mavia. 51 of just 39 deliveries. At one stage he was striking at 60, but now it's well over 100. Last ball of the over coming up. Again played nicely down to long on. Single added. 17 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 119 for 6. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल। So an expensive last over that from Mustafa Musa, going for 13 runs in his last over. Shayan Khalid is going to continue. He's going to be bowling to Mohammad Mavia, who is pretty settled at the crease now. This time again, starting from way outside the off stump. Wide signal by the umpire. Crucial over these from both sides. If Mohammad Mavia will stay there till the end, he can take his side to 150. This time played on the offside, no run taken. Top knock this from Mohammad Mavia. He has spaced his innings beautifully. This time again went for that big shot on the onside. The fielder at square leg was waiting for it. Just a single added. Mohammad Bilal has supported him well so far. He has scored just 4 runs but has given most of the strike to Mohammad Mavia. This time coming down the track, played straight to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling by Shayan Khalid. The run rate is now touching 7 runs and over now. 15 more deliveries to go in this innings. Can they cross 150? This time scooped it over the fine leg position. There is no fielder on the onside. The batsman meanwhile will cross for 3 runs. Good thinking from the batsman there. He knew there was no fielder at the fine leg position. He moved away on the offside, played it over the head of the wicket keeper, and then there was this long chase for the fielder at square leg. And meanwhile the batsman completed those 3 runs. So crucial runs these for the batting side. Mohammad Mavia is back on strike though. This time played it straight down to long off. He will be happy that he couldn't time it that well, otherwise that would have gone straight down to throat of the long off fielder. Mohammad Mavia's stay at the crease is pretty crucial for Sumya Gladiators. Last ball of the 18th over coming up. Shayan Khalid to Mohammad Bilal, who comes down the track, and a soft dismissal in the end. The fielder at extra cover position takes it. Noman Bari makes no mistake with the catch. All Mohammad Bilal needed to do was to provide support to Mohammad Mavia. This time he was looking to play that big shot. Shayan Khalid bowling it slower, slicing it off the outside edge, and Noman Bari was waiting at the extra position.
So 8 wickets have been down. Sumya Gladiators now 125 for 8. for 7 in fact. लाहौर सिटी कराची एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Noman Bari has been brought into the attack to bowl his final over tonight. He bowled his previous 3 overs from the opposite end and he's going to finish his spell off from the masjid end now. Mohammad Mavia is on strike, played on the offside. Has he found the gap? Yes, he has. Just a single though. Taha Arsalan is the new batsman in after Mohammad Bilal was dismissed in the previous over. This time went for that big shot and he has deposited that out of the ground. Mohammad Mavia is looking pretty dangerous now. Noman Bari gave it a flight, pulled it outside the off stump, and Mohammad Mavia absolutely smashed it over the long on fielder. This time again going for that shot outside the off stump, over the head of the extra cover fielder. 2 runs will be added to the total. Crucial runs these for Sumya Gladiators. Mohammad Mavia is playing a top knock here. Spinner bowling the 19th over of the innings has always proven to be very risky, especially to the batsman who is very set. This time again full toss outside the off stump. Good piece of fielding that at the point position. Otherwise that would have been another boundary. Mohammad Mavia should consider himself unlucky that he missed out on that opportunity. Taha Arsalan is a new batsman. So there will be a change in the field to the left-hander now. Bowling over the wicket, Noman Bari. To the left-hander, Taha Arsalan. All the fielders are inside the 30-yard circle on the offside. Deep mid-wicket and deep square leg in place. This time bowling it fast into the stumps, not giving any room to the batsman. Mohammad Mavia is going to have a word with the batsman. He'll be asking the batsman to see out this last delivery from Noman Bari so that he can get strike in the last over. Mohammad Mavia. There you see, easily defended by Taha Arsalan. Nice finish to the over by Noman Bari. 19 overs have been bowled. Sumya Gladiators are 136 for 7. जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk।
Shayan Khalid is going to bowl the last over of the innings. Risky decision this from the fielding side captain, especially knowing that Numan Chawla has 1 over left in his spell. He could have bowled his last over. Mohammad Mawiya is set. Again skying up in the air. Will that be taken? Easy catch by the fielder on the offside. So a brave decision from the fielding side's captain has brought success. Mohammad Mawiya was looking to play the big shot of the very first ball of the final over. All he managed to do was to sky up in the air. And it was a nice catch again by Numan Bari on the offside. So with that dismissal, Sumya Gladiators have now lost their 9th wicket. Mohammad Mawiya is gone after scoring brilliant 65 runs of just 40 deliveries. Sumya Gladiators are 136 for 8. नेटवर्क 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद। Asad Asif is a new batsman and he's going to join Taha Arsalan at the crease. Taha Arsalan is on strike. Again coming down the track and an easy stumping chance this for the wicket keeper. Wide signal by the umpire, but it's going to be a wicket to Shayan Khalid. Poor short selection this from Taha Arsalan. He still had 5 more deliveries in the over. In fact, he decided to came down the track and the bowler cleverly bowled that one wide. And the keeper was sharp enough to finish the stumping. So 2 wickets of 2 balls to Shayan Khalid. Taha Arsalan goes for duck. Sumya Gladiators 137 for 9. और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज। Umar Imran is the last batsman on strike now. And Shayan Khalid is on a hat-trick.
Can he pick up the second wicket, second hat-trick of the tournament? Earlier we saw Mustafa Musa picking up a hat-trick against NS Chargers. Missing that. Not sure whether the fielding side realized that Shayan Khalid was on hat-trick, because there were many fielders close to the batsman. Umar Imran pulled by Shayan Khalid. So Shayan Khalid, although he couldn't have a hat-trick of the previous delivery, but now has dismissed Umar Imran now. And with that, Shayan Khalid has picked up his 4th wicket of the night. Sumya Gladiators have been dismissed for just 137. They were looking pretty settled when Mohammad Mavia and Hamza Altaf were batting. They even didn't bat out their full 20 overs. Haris Altaf was the first batsman to be dismissed for just 5. Then Ibrahim Salim also scored just 1 run. Alam Bhimani scoring 14. Mohammad Mavia stayed till the end for beautiful innings of 65. Yunus Tai just scoring 1. Mohammad Muzammil Bhatwa also just scoring 12. There were signs of aggression by Hamza Altaf when he smacked those 3 sixes, but even he was dismissed after just scoring 25. And then there was nothing to speak much of. Mohammad Bilal only scoring 7, and then there were knots from Tahar Salan and Asad Asif. And Umar Amin also dismissed. Umar Imran also dismissed with just second delivery. Mustafa Musa was pretty economical in his first spell of 3 overs, was pretty expensive in his final over when he went for 13 runs. He ended up with 2 wickets for 28. Noman Chawla picking up a wicket in his 3 overs. Mubashir Anwar picking up 2 wickets in his 4 overs. Noman Bari went wicketless, went for 26 runs as well. Afan Imran giving away 13 runs in his 1 over. And Shayan Khalid ending the innings with 4 wickets and going for just 18 runs. So we'll be back in the second innings when Mashal Plastic Tigers will be needing 138 in their allotted 20 overs. महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची कह रहा है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार,
SD और SBCA से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं
और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएगा। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएगा। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, Two wickets, so indeed it was a hat trick. First ball coming up into the pads, Munibur Rahman. The way down the leg side, the ball was always moving into the right-handed batsman. So an easy decision it was for the umpire. Good start this from Sumya Gladiators. As you see the ball starting on the leg stump and then moving further inside the batsman. Again, it's good appeal. Will the finger go up? No. It was even closer than the previous ball. As you see the ball again moving back in. But you could always see the middle stump and the off stump. So it suggested to the umpire that the ball must have been moving down the leg side. Good start this from Asad Asif. Left arm swing bowler bringing back into the right-handed batsman. They will be needing quick wickets in the batting power play. Sumya Gladiators to keep their hopes alive in this game. This time driven on the offside. Safely fielded by the fielder at mid-off.
This time the ball didn't come back in and went with the arm. So the target is not a big one, just 138. Wickets will be the key for Sumya Gladiators bowlers. Again, the ball was very close to the off stump. Munibur Rahman going for that big shot. Good start this from Asad Asif, keeping it full, allowing the ball to swing. The two batters are now having a word in the middle. We saw last night a target of 159 were chased pretty comfortably by Classic Garments when this chased 159 down in just 14 overs and won the game by 8 wickets. Asad Asif is going to continue. This time again bringing the ball back in. Batsman getting an inside edge. It will just be a single. Fielded by the wicketkeeper himself. So Munibur Rahman is off the mark now. Mustafa Musa is now taking guard. Good start this from Asad Asif so far. And this time nicely driven on the offside. Has he found the gap on the offside? The fielder is chasing that. Will that go for the boundary? And yes, it has. Good fielding effort down the boundary by the fielder at the cover position. But it was timed so well by Mustafa that the ball just went over the ropes. There you see, nicely leaning forward into the drive. The fielder was after that till the very last moment. He tried to pull the ball back in, but in the end, successfully ball over the ropes. So boundary of the first ball to Mustafa Musa, and Mashal Plastic Tigers after one first over are 5 without a wicket. इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। So Hamza Altaf is going to share the new ball. He's going to bowl from the masjid end. He's a fielder deep on the onside, a deep square leg. Munibur Rahman is off strike, starting off with a wide outside the off stump. It was a very good shot of the last ball of the previous over by Mustafa Musa, scoring the boundary of the very first ball he faced from Asad Asif. This time again bowling it wide outside the off stump. Signal is wide again. So the required run rate is just under 7 runs and over for Mashal Plastic Tigers. Munibur Rahman and Mustafa Musa will be looking to utilize the batting power play. Upish and finding the gap between the extra cover and the mid-off. Just a single though. His heart must have been in his mouth, Munibur Rahman, when he played that shot. There you see it was a fuller delivery. Trying to play it over the head of the cover fielder. Just finding the gap. No major damage done though, just a single added to the total. Mustafa Musa now is on strike. Coming down the track looking for that big shot. Completely missing that. There you see he was looking to smack it over the mid-on fielder. Mustafa Musa means business tonight. It was a good spell of fast bowling earlier from him when he picked up 2 wickets. Now he's out there in the middle. Again trying to pull that one away.
The ball not bouncing as much as he expected it to be. Hamza Altaf, after bowling 2 wides, has adjusted his length nicely. 130 runs required of 111 deliveries. Not a big ask this from Mashal Plastic Tigers batsman. This time again hit on the offside. Has he found the gap? Yes, he has. Second boundary to Mustafa Musa now. Hamza Altaf this time bowling it full, swinging it away, and Mustafa Musa was waiting for it, driving past the mid-off fielder. And there was absolutely no chance because it was timed so beautifully. So Mustafa Musa is now dealing with boundaries only. He's on 8 of 2 fours. Good start this from Mashal Plastic Tigers batsman. Still no changes in the field though. This time again bowling it wide outside the off stump. Another wide signal by the umpire. I still believe if you're moving the ball away from the right-handers, you need to have that first slip to put extra pressure on the batsman. This time smashed it straight down the ground. Another boundary to Mustafa Musa. 2 boundaries in this over now. Previous ball was full from Hamza Altaf. This time he bowled that one short, and Mustafa Musa absolutely smashed that straight as an arrow. No chance for the fielder at mid-on or mid-off to cut that one off. Seems like a good move this from the Mashal Plastic Tigers batsman to send Mustafa up the order. This time again, wide signal by the umpire. I think it was a very close call. It wasn't that far away from the batsman, as you can see. Yes, clearly inside the line. Tough decision this. Bowler should consider himself very unlucky. So Hamza Altaf has been proving very expensive in his very first over. He has gone for 13 runs so far. Still 1 ball to go. Mustafa Musa has managed to hit 2 boundaries in this over. This time again played it on the offside. Has he found the gap? Good piece of fielding by the fielder on the offside. Single taken. So 2 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are off to a flyer. They are 19 without a wicket. जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, dangerous so far. He has scored 3 boundaries in just 6 balls that he has faced. This was good delivery again, coming back into the right hander. It was full. Mustafa Musa hitting it straight to the bowler. Asad Asif going for 5 runs in his previous over. Hamza Altaf was pretty expensive in the second over. This time coming down the track and looking to heave it on the onside, completely missing it. Nicely gathered by the wicket keeper. As you can see, came down the track, looking to hit it over mid-wicket. Couldn't connect it. So Mashal Plastic Tigers batsmen are in a hurry. They want to finish off pretty quickly now. I think it's a pretty good batting track. We didn't see that much turn in the first innings. Although the new balls does swing under flashlights. This time again hitting it hard straight to the mid-wicket fielder.
I think Mustafa Musa also needs to realize that along with the boundaries that he's hitting, he can also rotate the strike and pick up those singles and twos. That is exactly what Munibur Rahman must have been telling him now. The required run rate is not an issue. They still have ample overs to play. The target is not a big one. We are just in the third over, and so far 4 extra runs have been added to the total. This time bowled it slower. Nicely played on the offside by Mustafa Musa. He waited for that delivery. Again, he was looking to play that big shot, but when he saw the bowlers bowling it slow, he delayed his shot. The scorecard moves on to 20 for no loss. We are still in the third over. Good start this so far from the Mashal Plastic Tigers batsman. Munibur Rahman has been watching all the action from the opposite end. Now he's on strike. This time hit on the offside. Has he found the gap? No. Mohammad Mawiyah standing at mid-on. Fine leg now, moves to the boundary. Deep mid-wicket is in place as well. Mid-off and mid-on are inside the circle. Still no slip. Again coming down the track, looking to heave it on the onside. The keeper couldn't gather it. Byes have been added to the total. So 3 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 22 without a wicket. इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम। So straight away there has been a change in the bowling attack from the Masjid end. Hamza Altaf has been replaced by Taha Arsalan. The two fielders outside the 30-yard circle at long on and long off. He has taken a slip. That ball capped low. Nicely played on the onside, just a single. Good running by the batsman. Mustafa Musa managing to get his bat down just at the last moment. Otherwise that ball would have crashed onto his pads and would have been an easy decision for the umpire. This time Munibur Rahman guiding it down to the point position. No run taken. Good move this from the bowling side captain, and the fast bowler are going for runs. You need to try different options to pick up those wickets, especially when the batting side is not chasing a big target. This time again moving away off the offside. Munibur Rahman looking to hit it past the fielder at point, missing it altogether. This time it was full on the onside, swept, and it's going to be a boundary to Munibur Rahman. First to him. Taha Arsalan was bowling it well outside the off stump. As soon as he corrected his length, bowled within stumps, Munibur Rahman was waiting for it, and there was no fielder deep on the onside, so he swept it, found the gap towards the mid-wicket position, and brought up his first boundary.
Good start this from the Mashal Plastic Tigers. This time hitting it down the ground to long off fielder. Good batting this from Munib. And you have scored a boundary of previous delivery. Take a single. Get at the non-striker's end. Gives chance to the other batsman. So Mustafa Musa now is on strike. He has scored 15 runs so far of just 12 deliveries that he has faced. Good batting this in the power play. This time again it was flat. Hit on the offside. No damage done. 4 overs have been completed. Mashal Plastic Tigers are 28 without a wicket. बहुत तेजी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क। Asad Asif is going to continue with his third over. Munibur Rahman is going to be on strike. So far this has been a very good start from Mashal Plastic Tigers. They haven't lost a wicket in this batting power play and they have managed to score at 7 runs an over. Most damage being done by Mustafa Musa. 3 boundaries has been hit by Mustafa. Munibur Rahman also hitting a boundary in the previous over. This time nicely played on the onside. The fielders need to attack the ball if they want to create any sort of pressure to the batsman. Easy single given away on that occasion. Mustafa Musa now is on strike. What can he do? This time again, good running, nice single taken. Could have been overthrows, but the fielder at mid-off was pretty up to the task. Munibur Rahman back on strike. So far has scored 9 of 12 deliveries. This time again hit on the pads, but the ball pitched way outside the line of leg stump, so there was no chance of appealing for that. As you can see, the ball pitching outside the leg stump hit his front leg. It was too high as well. Hopefully he hasn't injured his leg, Munibur Rahman, because he has a pretty crucial role to play further in the tournament for Mashal Plastic Tigers. He's the regular wicket keeper and a top order batsman. This time nicely played on the offside. Quick single taken. There was a run out opportunity, but the keeper couldn't gather the ball. The throw wasn't good either. As you see, Munibur Rahman guiding it to the point fielder. It was sharply fielded, but if the throw would have been direct hit, it could have been curtains for Mustafa Musa. Good batting this by Mashal Plastic Tigers batsman.
They're utilizing every opportunity to score runs, be it boundaries or singles. And the fielders are just giving easy singles away. That's not how you create pressure on the batting side when you're defending a pretty modest total. This time coming down the track, Mustafa Musa. He has found the gap. Will it go to the boundary? The fielder at mid-on after it. And he manages to pull it off. So 2 runs taken by Mustafa Musa. As you can see, he came down the track, found the gap between the mid-wicket and mid-on field. The mid-on fielder gave it a good chase and managed to stop the ball before it crossed the boundary. A good piece of fielding there by the fielder at mid-on. Last ball of the over coming up. 5 runs of the over so far. Nicely dug in. Another single taken by Mustafa. So 5 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 34 without a wicket. University, hospital, community centers, commercial avenues, cafes, restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall और sports complex भी. Luxury high-end apartments, premium villas, state-of-the-art hill resorts और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर. गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ. ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है. सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने. वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है. और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है. इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है. तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए. एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का. मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए. जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो. ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों. तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है Tahar Salan is going to continue from the masjid end for his second over. Good opening partnership this from the two batsmen Munibur Rahman and Mustafa Musa. It's always nice to give up a good start, to lay a good platform from the batsman coming later in the over. Pulled away. Nicely fielded by the fielder at mid-wicket position. No run taken. That's the sort of fielding effort you need. There you see Mustafa Musa pulling that one away, and it was a diving stop by the fielder at mid-wicket. This time coming down the track, and he has been stumped, Mustafa Musa. Played one shot too many. Nice piece of bowling this by the left arm spinner, Tahar Salan. Previous delivery was pretty short. This time he bowled it full. Mustafa Musa came down the track looking to clear the boundary on the onside, and in process only got himself out. So first wicket down now for Mashal Plastic Tigers. Mustafa Musa, after scoring 3 boundaries, has been dismissed for 19. And the score is 34 for 1. गुलमोहर सिटी एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल. कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है. वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी. इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी. लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर. गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ.
ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। So Taha Arsalan picking up a wicket of his previous delivery, that too of Mustafa Musa, who was looking pretty dangerous. The new batsman is Noman Bari. He is also pretty much capable of hitting those big shots. He's a left-hander, so there will be a change in the field. In fact, both the fielder outside the 30-yard circle are straight, long on and long off. Nicely playing it on the onside, no damage done. Dot delivery. Good bowling this from Taha Arsalan. This time bowling it wide, almost the batsman dragging the ball back onto the stumps. He was looking to play that big shot on the onside. Got inside edge. So Noman Bari looking to utilize these final two deliveries of the batting power play that are left. Taha Arsalan will be looking to pick up another wicket to bring his team back into the contest. This time playing it on the offside. Another dot ball. Good over there so far. No run has been conceded. Can he end up with a wicket maiden? This time bowling it flat on the onside. And it's a dot ball. So wicket maiden from Taha Arsalan. 6 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are still 34 for 1. Let's look at the batting scorecard. There was a change in the batting order. Mustafa Musa opening the batting with Munibur Rahman. He scored 3 boundaries and he was the only wicket to fall. He went for 19 in the previous over from Taha Arsalan. Munibur Rahman has scored 10 runs so far of the 14 deliveries that he has faced. Noman Bari is yet to open his account. Good start this one from Asad Asif. He bowled 3 overs for 13 runs. Nicely brought the ball back into the right-handers. Hamza Altaf was pretty expensive in his only over that he bowled. Went for 14 runs. And Taha Arsalan only conceded 6 runs in his 2 overs. Also picked up a wicket of Mustafa Musa. So the batting power play has been done. Another change in the attack. Now from the opposite end. Looks like it's going to be another spinner who is going to replace Asad Asif. Or I think it's Asad Asif. He's going to continue with his spell. He's going to bowl out his 4 overs on the trot. The batting power play has been done, so that he can afford to have fielders outside the 30-yard circle. The fine leg is outside. The point fielder, the cover fielder in fact, is standing at the boundary. His deep square leg as well. Long on also standing at the boundary, deep. Nicely bowled, nicely played on the offside. Sharp single taken. So the run rate has brought down under 6 runs and over by Sumya Gladiators bowlers. Earlier, Mashal Plastic Tigers were scoring at 7 runs and over when Mustafa was looking to clear the boundaries. Asad Asif has been a good inclusion in this Mashal Plastic Tigers squad. Sumya Gladiators squad in fact. He will start off with a slip to Noman Bari. Noman Bari looking to play that on the offside. Missing it. Straight to the wicket keeper. Noman Bari is
not a batsman who uses his feet a lot. He relies more on his hand-eye coordination, something that Virender Sehwag used to do earlier on in his career. He's yet to open his account. He has faced 5 deliveries so far, Numan Bari. This time again, it was very close to the off stump. Almost rattled his off stump, Asad Asif on that occasion. He bowled it full. Numan Bari came down the track, looking for that big shot, missing it. Could have been 2 down, Mashal Plastic Tigers. Yes, the target is not a big one, but still need to make sure that they build a good partnership, Numan and Muneeb. Sumya Gladiators haven't won a game in this tournament, but they have fought well till the last over in many matches. This time bowling it slow again. Nice change by the bowler, deceiving the batsman in length and the pace. So 4 boundaries have been hit so far in this innings by Mashal Plastic Tigers. 3 coming off the bat of Mustafa and 1 from Munibur Rahman. Numan Bari is yet to open his account though. The slip fielder has moved closer. This time bowling it wide, signal by the umpire. Mashal Plastic Tigers bowler were pretty disciplined when they were bowling. This time a heave on the onside. It's just going to be a single down to long gone. Good over there so far from Asad Asif. Just a wide and a single. So run rate has dropped considerably now. It's just over 5 runs and over. Mashal Plastic Tigers are scoring at. Munibur Rahman hasn't taken many risks. He has only scored 1 boundary in his innings so far. And he hasn't looked pretty settled either. Especially the left arm or angle. Bowling it away. Taking the ball away and also bringing it back in the air. This time down the leg side. Another wide. Giving away too many easy runs. Sumya Gladiators bowlers. I still think if they can bowl those dot deliveries, they can still create pressure on the batsman, who will then look to play those big shots and can end up losing their wickets. So last ball of the over coming up, as long as it's a legitimate delivery. Playing it on the onside. Fielded by the fielder at mid-wicket. Just a single to end the over with. 7 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 39 for 1. ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मयार, एचडी और एसबीसी से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची कह रहा है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान। Going to continue with his 3rd over. He picked up a wicket of Mustafa Musa in his previous over. Can he do another damage to Mashal Plastic Tigers' chase? It will be very interesting if they lose a wicket now, because their run rate is not that healthy. And Sumya Gladiators bowlers have maintained good, decent pressure so far. Munibur Rahman again moving inside the crease.
playing it to the fielder on the offside. Umar Imran fielding it. Only single taken. Change in the angle to the left-hander now. He's going to bowl over the wicket. Fielders on the offside are coming inside the circle. Both square leg and mid-wicket are deep outside the 30-yard circle, standing at the boundary. This time he has played that straight. Has he timed that well? No! Nice catch by the fielder at long off. So Taha Arsalan with that dismissal has now picked up his second wicket. That will definitely dent the chase of Mashal Plastic Tigers now. He bowled it wide, he bowled it short. Noman Bari looking to smash it down to long off in fact. And the fielder just positioned himself perfectly and took a nice catch. So Mashal Plastic Tigers now have lost their second wicket. Noman Bari dismissed after just scoring 1 run. The scorecard is Mashal Plastic Tigers are 40 for 2. तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफे। So Taha Arsalan picking up his second wicket with his slow left armer. Anas Mustafiz is the new batsman in. Seems like it's not going to be an easy chase for Mashal Plastic Tigers now, since they have lost their second wicket and they are still in the 8th over. Nice piece of bowling this from Taha Arsalan. Almost getting an inside edge. The ball kept low. Anas Mustafiz went back to play on the back foot, missing it altogether. So Taha Arsalan maintaining the pressure on the new batsman coming in. This time bowling it flat, getting an outside edge, almost getting it to the fielder, a short third man. Nicely varying his pace, Taha Arsalan now. Has been pretty economical spell from him so far, only giving away 7 runs, and he is in his 3rd over. Also picked up 2 wickets. Nicely defended to the bowler Anas Mustafiz. Last ball of the over coming up. This time again went back to play on the back foot. Couldn't find the gap on that occasion. Another dot ball. 8 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 40 for 2. is restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall और sports complex भी, luxury high-end apartments, premium villas, state of the arts hill resorts और farm houses जो कि डिज़ाइन किए गए हैं modern architecture पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती हैं। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात,
اتنی زیادہ سہولیات ہونے کے باوجود اس کی قیمت ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے. اس کی سائٹ There's been a change in the bowling attack from the opposite end. Umar Imran now has replaced Asad Asif. Umar Imran, slow left arm Chinaman. Another spinning option for the bowling side. Starting off with a full toss, getting a leading edge. Landing it between the fielders at mid-wicket and long on. 2 runs taken by Munibur Rahman. He couldn't time it. His eyes must have lit up when he saw that full toss on leg stump. Left arm Chinaman, always a wicket taking option for the bowling side. This time swept on the onside. Slight misfield, just a single though. Umar Imran, all he needs to do is to bowl it wide outside the off stump, get the batsman to drive. Anas Mustafi is now on strike. He's yet to get off the mark. Looks like this match is going to go down to the wire as well. The current run rate is not that healthy. They are still scoring at 5 runs and over. They have lost 2 wickets as well. Mashal Plastic Tigers. There's been a slight delay. قسطوں میں اپنے گھر کے خواب کو اب حقیقت بنائیں. مزید تفصیلات آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.gulmohargroup.com.pk. مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانا بس ایک خواب ہے. کیا یہ خواب حقیقت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس خواب کو حقیقت کا رنگ دے رہا ہے گل مہر سٹی کراچی. ایک ایسا رہائشی پروجیکٹ جو ڈیولپ ہو رہا ہے صحت مند ماحول کے لیے، ایک گرین سٹی کے کانسیپٹ پر، جہاں آپ اور آپ کی فیملی ایک پرفضا مقام میں زندگی گزار سکتے ہیں. کراچی حیدرآباد M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پہ واقع روڈ فیسنگ پروجیکٹ، جو کہ آپ کو مہیا کرتا ہے جدید ترین سہولیات سے آراستہ معیار زندگی. اور ہاں، اس کا لیئر پلان اور آرکیٹیکچر ورک بریلینٹ، کم قیمت، اعلیٰ معیار، SD اور SBCA سے منظور شدہ، سرمایہ کاری کا بہترین. So the play is about to resume after a slight delay. Umar Imran is going to continue. Anas Mustafi is on strike. 3 runs of this over so far. Again bowling it full toss. Has he timed that well? Anas Mustafi is taken at long on. First wicket for Umar Imran. Anas Mustafi is looking for that big shot, only managing to lose his wicket. This time Umar Imran flighting it outside the off stump. Anas Mustafi is looking to clear the boundary down to long on, but the fielder was waiting for that catch. So 3rd wicket down now for Mashal Plastic Tigers. The latest batsman being dismissed is Anas Mustafi for a duck. Mashal Plastic Tigers are now 43 for 3. موقع جو آپ کے بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے. گل مہر سٹی کراچی یہ کہنا ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے. اپنا پلاٹ بک کرنے سے پہلے ایک بار سائٹ ضرور وزٹ کریں. تو پھر چلتے ہیں سائٹ پر، آئیے. جی، میں اس وقت موجود ہوں گل مہر سٹی کراچی کی سائٹ پر، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے، جو اس پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور ہاں، آپ چاہیں تو سائٹ آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں موجود پروفیشنل عملہ اس پروجیکٹ کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم وقت موجود ہیں. تو آئیے، آپ بھی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیں.
और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची। So Ali Mustafi is now replacing Anas Mustafiz, who was dismissed of the previous delivery by Umar Imran. So Mashal Plastic Tigers are now 3 wickets down, and it's turning out to be a crucial match. Looks like it's going to go down to the wire. Ali Mustafiz driving it on the offside. Not a good piece of fielding by the fielder at extra cover. He will get off the mark of the first delivery. Munibur Rahman now, he has been at the crease since the start of the innings. So he will have to play the sheet ankle role, and will have to stay there till the end if he wants to guide his team to the victory line. Good start this from Umar Imran so far. There he goes, getting a leading edge over the head of the wicket keeper. The fielder is short third man. There is a run out chance. But Munibur Rahman was back in. Almost picking up another wicket, Umar Imran. There you see flighting it up. Munibur Rahman went for that slog sweep. Got leading edge. Was going down to the boundary, but the fielder at third man got that one off. 2 runs added to the total. Good contest this is turning out to be between the bat and ball. Last ball of the over coming up now. Again playing it nicely down to long on. Just a single though. So 9 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are now 47 for 3. विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूम। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहां सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत जिंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। Tahar Salan, the most successful bowler so far for Sumya Gladiators, is now going to bowl out his spell. He has picked up 2 wickets so far in his 3 overs, has given away only 7 runs. Can he pick up another wicket now? This time playing it on the onside. Good piece of fielding there by the fielder at swell leg position. The batsmen are coming back for the 3rd run. Not a good throw. Tahar Salan bowling it down the leg side, and Munibur Rahman playing it over the head of short fine leg fielder. Good chase there by the fielder at deep square leg. He had no idea where the ball went, but he prevented the boundary. That's the more important. Ali Mustafiz now is on strike, and Tahar Salan is going to change the angle. He's going to come over the wicket. With that 3 runs, 50 comes up for Mashal Plastic Tigers as well into the 10th over. Again bowling it wide outside the off stump. Ali Mustafiz couldn't get bat on that occasion. The ball kept low. All of a sudden there are more shouting. The fielders are appreciating the bowling effort. This time played it straight down to long off. Just a single to Ali Mustafiz. All the batsmen need to do is to maintain a good partnership now. They have already lost 3 wickets. Cannot afford to lose any more. The target is not a big one, but the required run rate is creeping up all the time. The run rate is still below 6 runs and over.
Remember, after winning the toss, Mashal Plastic Tigers invited Sumya Gladiators to bat first. This time again played it on the onside with soft hands, fielded by the bowler himself. The left hand right hand combination is going to trouble the bowling side a bit when it comes to adjusting the field. What a spell this has been from Tahar Salan. 2 wickets and he is into his 4th over. Inside edge onto the pads, straight to the bowler. Just 5 runs of this over so far. Last ball of the over coming up. Ali Mustafiz is on strike. Again playing it on the offside. No run taken. What a spell this has been from Tahar Salan. He finishes off with 2 wickets for 12 runs. So 10 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 52 for 3. Munibur Rahman, as you can see, is still out there in the middle. He's on 23. Mustafa Musa was looking very good earlier on, but he was dismissed for 19 runs. Noman Bari didn't trouble the scores much. Only scored 1 run. Anas Mustafiz went out for a duck. First wicket by Umar Amin, that was. The new batsman is still there, Ali Mustafiz. 7 runs have been given so far in wides. Asad Asif bowled out his spell of 4 overs, giving away 18 runs. Hamza Altaf giving away 14 runs in the only over that he bowled. Tahar Salan also finished off his spell, picking up 2 crucial wickets and giving away only 12 runs. Umar Amin also picking up a wicket in his last over. Umar Imran is now continue from the opposite end. Munibur Rahman, it has been a struggle so far for him. He hasn't looked fluent, he hasn't looked settled, but he's still there fighting hard for his team. Almost caught and bowled chance for Umar Imran. Munibur Rahman was looking to play it on the onside, sliced it in the end. Umar Imran wasn't expecting the ball to come into his direction. Would have been a very crucial wicket at this stage of the innings. How crucial will that turn out to be towards the end of the game? Umar Imran is bowling pretty sensibly. This time again flighting it on the offside. It's in the air. Is there a chance for the fielder? No, it's landed between the fielder. 2 runs taken. So Umar Imran providing chances to his fielders out there in the field. This time again it was flighted outside the off stump. The batsman was looking to play the aerial shot on the offside. Couple of runs taken. This time again hit on the offside. 1 bounce straight to the fielder. Another single added. With that single, Munibur Rahman is now back on strike. Umar Imran is bowling beautifully. Just a fine leg inside the circle. All the other fielders on the onside are outside the 30-yard circle. This time pulled away by Munibur Rahman. Has he found the gap? Yes, he has. Welcome boundary to Munibur Rahman. This time he was waiting onto the back foot. Umar Imran bowling it short. Munibur Rahman was waiting for it and absolutely smashed it. Found the gap between the mid-wicket and long on position. Umar Imran needs to make sure that he maintain that pressure on the batting side. The run rate slowly moving up to 6 runs and over. Munibur Rahman with that boundary now moves to 28. This time hit on the offside. It's just going to be a single. The fielder at cover is going to cut that one off. So Umar Imran, after picking up a wicket in his previous over, has been a little expensive in this one. Almost took that caught and bowled chance to dismiss Munibur Rahman, but
Just the ball just didn't stick in his hands. Oh, the ball just came back in. It was a wrong one, I guess. Single taken. There was a run-out opportunity as well. The direct throw must have sent the batsman to the dugout. So 11 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 62 for 3. एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। So Mohammad Bilal is going to replace Tahar Salan from the masjid end. Ali Mustafiz is now on strike, and both batsmen will be now looking to get a move on. The required run rate is building up. Almost went between the bat and leg. Could start this from the bowler. Almost took the leg stump as well. Mohammad Bilal coming around the wicket to the left-hander. The captain straight away making changes in the field. He has brought Slip into position now. Still looking for those wickets, and only wickets can make him win the match. Played it on the offside and it's dropped. That was an easiest catch as you can get. Mohammad Bilal would have been celebrating with his first wicket, but that was an easy catch drop being put down by the fielder. These sort of chances need to be taken if you want to win these close encounters. Ali Mustafiz should be considering himself very lucky on that occasion. Mohammad Bilal almost picked up a wicket in his very first over. Munibur Rahman now is back on strike. Looking to play that sweep. There is no fielder on the fine leg position. The fielder at square leg is after that. The keeper himself chased it down. 2 runs completed by Munibur Rahman. Good thinking by the batsman. He knew there wasn't any fielder down at fine leg and there was a big gap between the square leg and short third man. All he needed to do was to paddle it down to fine leg. Another couple added. So Munibur Rahman slowly and gradually increasing his strike rate. He is now 31 runs of 27 deliveries. Almost was looking to play it on the onside. Checked his shot at the last moment. Appreciating the delivery, the flight on that ball. Munib. Good sportsmanship. This time hit away on the offside. The fielder at D point is going to cut that off, but not before the batsman crossed for 2 runs. What a wicket that would have been for Mohammad Bilal if the fielder had taken it. Ali Mustafiz would have been going back to the pavilion instead. The last ball of the over coming up from Mohammad Bilal. This time again played it on the offside. Quick single taken. So 12 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 68 for 3. कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी।
इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक Umar Imran is going to continue for his third over from the opposite end. I still think he needs to have fielders close to the batsman in case he induces an outside edge. This time played on the back foot, pulled away. And that has gone all the way for 6. Munibur Rahman is now looking settled. He's judging Umar Imran's leg to perfection. Again he played it on the back foot. And there was no fielder deep at mid-wicket. So it was a safe shot in the end. The captain again having a long chat with the bowler, asking him to keep the ball fuller. With that 6, Munibur Rahman now has moved on to 40. This time again, has he played down to the fielder at long on? No. One bouncer to the fielder. This time again he was looking to play another big shot, almost got a leading edge. But the fielder at long on was way too deep. Just a single added to the total. Mashal Plastic Tigers moving along, 75 for 3 now. Good partnership building up between Ali Mustafiz and Munibur Rahman now. One of these two batters need to stay there till the end. Preferably Munibur Rahman, who is looking settled now for 41. This time again hit on the offside. Again the ball landing into the gap. Another 2 runs taken. Umar Imran is creating chances, but luckily for the batsman, the ball is landing between the fielders. The batsmen are willing to take risks of Umar Imran's bowling. This time ball coming back in. Played it very late, the batsman. Umar Imran, after picking up a wicket in his very first over, has now given away 26 runs. And he's yet to finish his third over. So he has been a pretty expensive. He has been the weakling in their bowling attack so far. Played it on the offside. The run out chance, there has been an appeal. The batsman is safely inside the crease. There you see again flied it outside the off stump. The batsman played it towards the cover position. He was looking for the single but managed to come back into the crease at the right time. So last ball of the over coming up from Umar Imran. Again bowled that wide outside the off stump. Smashed it to the fielder at deep extra cover. Just a single to finish the over with. 13 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 78 for 3. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर।
जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SB। Mohammad Bilal is going to continue for his second over from the Masjid end. Ali Mustafiz is on strike. He's supporting it well. As he found an outside edge, big appeal, and the finger has been raised. So Mohammad Bilal, who was pretty unlucky in his previous over, has now picked up his first wicket of his very first delivery in his second over. The batsman dismissed, Ali Mustafiz. Again, you see flying it outside the off stump. Ali Mustafiz looking to play it big on the offside, only managing to get an outside edge, and it was a good catch in the end by the wicketkeeper. So Ali Mustafiz has now been dismissed after scoring 10 runs of 14 deliveries. Mashal Plastic Tigers are 78 for 4. इसी से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका, जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। So Mubashir Anwar is the new batsman in Mashal Plastic Tigers, losing their 4th wicket of the previous ball from Mohammad Bilal. And this contest is turning even more interesting with every ball being bowled. Mohammad Bilal with that wicket has brought his team back into this contest, but I still feel Munibur Rahman is the key. This time hit on the offside, fielded by the fielder at extra cover position, no run taken. As I was mentioning, Munibur Rahman will be the crucial wicket for Sumya Gladiators if they want to win this game. This time again, flighting it outside the off stump. No run taken. Good bowling this from Mohammad Bilal. Good pressure being maintained. The captain is always looking for those wickets. There's a fielder at first slip as well. Outside edge. He's found the gap between the short third man and the point fielder. Fielded inside the boundary, just 2 runs taken. Just 2 runs of this over so far. Still 2 more balls to go. The score moves on to 80. This time again playing it on the offside. Has he found the gap? The fielder at deep point is going to cut that one off, but not before the batters are going to cross for 2 runs. Important run these for Mashal Plastic Tigers. 4 runs of this over so far. Also a wicket of Ali Mustafiz. Last ball of the over coming up. Mubashir Anwar on strike. This time again playing it on the offside. No run. So dot ball to end the over with. 14 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 82 for 4. काबिले एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है।
इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान्ड रोड नेटवर्क। So after a long discussion, there has been a change in the bowling attack. Alam Bimani is now going to replace Umar Imran. 6 overs remaining. 54 still more runs required by Mashal Plastic Tigers. Munibur Rahman this time hit that straight down the ground to long on, and they're coming back for a second run. Good piece of running this by the batters out there. Munibur Rahman has seized any opportunity there is out there tonight to score those 2 runs, to convert those ones into 2s. He's playing a very crucial knock here for his team tonight. He's on 43 not out. This time hitting it on the offside, finding the gap. Will that be stopped inside the boundary? No, the fielder at long off gave up the chase. Nice timing on that occasion by Munibur Rahman. Again, Alam Bimani bowling it full outside the off stump, giving it a bit of air, and Munibur Rahman playing it over the head of extra cover fielder. There was a long chase, the fielder at long off, but the ball eventually crossed the boundary. With that boundary, Munibur Rahman moves on 47 now. This time again, playing it off the offside. Has he found the gap as well? Nice piece of fielding there. 2 runs completed. So Munibur Rahman is now willing to take those risks. He's still not playing those aerial shots, but he's still finding the gaps. 6 runs coming of the last 2 deliveries in this over. Munibur Rahman now is on 49. This time cut away. Single taken, and with that single, Munibur Rahman now being up his half century. Crucial knock this. He has paced this innings beautifully. Earlier he was scoring under 100 runs per ball. Now his strike rate is well over 120. This time Mubashir Anwar playing it down to long off. So 10 runs coming off this over from Alam Bimani. Still 1 more ball to go. 9 runs in fact. Last ball of the over coming up. This time hitting away on the offside. Slight fumble by the fielder at short third man. It's going to bring another single. 15 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are looking settled at 93 for 4 now. Munibur Rahman came to open the bat with Mustafa Musa. He's still out there, has now completed his half century. Mustafa Musa was looking good initially, went for 19 runs. Noman Bari only scored 1 run. Anas Mustafiz didn't trouble the score much. Ali Mustafiz provide good support earlier on to Munibur Rahman, but he was the last batsman to be dismissed for just 10 runs. Asad Asif bowling out his spell
of 4 overs was pretty economical, gave away only 18 runs. Hamza Altaf was pretty expensive though, gave away 14 runs in the only over that he bowled. Taha Arsalan was the pick of the bowlers, picking up 2 wickets for 12 runs in his quota of 4 overs. Umar Amin was also pretty expensive in his final over, gave away 27 runs, also picked up a wicket. Mohammad Bilal was pretty unlucky in his first over, should have had 2 wickets, but he gave away 10 runs in his 2 overs and just picked up a 1 wicket. Alam Bhimani was expensive in his last over. Alam Bhimani is going to continue again. Gave away 11 runs in his previous over. Can he pick up a wicket and extra pressure to the batting side? Or will the batters milk away those runs in his over? Munibur Rahman now, after completing his half century, will be looking to play those big shots. The required run rate is 9 runs and over. This time hitting away on the onside. The fielder at long on is going to cut that one off. Only single taken. Bashir Anwar now is back on strike. This time smashed it down the ground. The fielder at long on is going to take that one off. Another single added. So Bashir Anwar is providing good support to Munibur Rahman out there, especially after Ali Mustafiz lost his wicket. This time played it on the onside. Has he found the gap? Big chase for the fielder, a deep square leg. 2 runs easily completed by the batsman. Munibur Rahman now batting on 54 runs. This time it's a full toss, swept away. It'll just be a single. Earlier we saw Mohammad Mavia playing crucial innings for Sumya Gladiators. Now it's Munibur Rahman turning it on for Mashal Plastic Tigers. Mubashir Anwar back on strike. This time hit on the offside. Couldn't find the gap on that occasion. And the single has been taken. The Sumya Gladiators are still not out of the competition yet. If they can pick up a wicket of Munibur Rahman at this stage, it will make things more interesting. Last ball of the over coming up. Munibur Rahman coming down the track, getting an inside edge. The fielder at deep square leg is going to cut that one off. 2 runs completed. In fact, the batter at the non-striker were looking for the third. And after the end of the 16 overs, Mashal Plastic Tigers are 101 for 4. www.gulmohargroup.com.pk महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो
तो फिर चलते हैं साइड पर, आइए। Bimani is going to continue from the opposite end. Mubashir Anwar is going to be on strike. Four more overs left. 37 runs still required. This time hit on the offside. Couldn't find the gap. Dot ball. The bowler is complaining from the fielder that there should be a fielder at the backup in case of overthrows. This time again hitting it on the offside, finding the gap. The fielder at deep point is going to cut that one off. This match is still not over, folks. They still require another 36 runs from 22 deliveries. The required run is almost touching 10 runs and over. Munibur Rahman is crucial. He needs to stay there till the end. This time nicely played with soft hands on the offside. Just a single. Just one more wicket can bring Sumya Gladiators back into this contest. And Mashal Plastic Tigers will be making sure that they don't lose any wickets from here on. Almost getting an outside edge. Mubashir Anwar was looking to blast that ball on the offside, missing it. This time again hitting it on the offside, finding the gap. The fielder at deep point is nicely positioned for that specific shot. Still two more balls to go in this over. It has been a good over so far from Alam Bimani. Munibur Rahman is now on strike. Can he get this boundary in this over? Mubashir Anwar is having a word with the batsman. Stopping at the last second, the bowler Alam Bimani. Thankfully, he didn't man-cat the batter at the non-striker's end. This time it's full toss, swept away on the onside. The fielder at deep square leg is going to cut that one off. Munibur Rahman should be disappointed with himself. He missed out an opportunity of hitting a boundary. 17 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 104 for 4. 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी Crucial last 3 overs remaining here tonight in this contest. Sumya Gladiators, although haven't won any game in this competition, but they have taken many matches down to the wire till the last over. And looks like this is going to be another thriller, another nail-biter. This time hitting it straight, taken by the fielder at extra cover position. So Munibur Rahman, the batsman, dismissed, and it's a big wicket for Sumya Gladiators. Munibur Rahman was looking settled with his 59 runs, and Mohammad Bilal flighted that outside the off stump. He was looking to hit it straight down to long off, only managing to slice it to the extra cover fielder. So 5th wicket down now for Mashal Plastic Tigers. The latest batsman dismissed being Munibur Rahman of 59. Mashal Plastic Tigers are now 105 for 5.
A very important wicket falling on the previous delivery. Munibur Rahman, the batsman, dismissed. Mohammad Bilal, the bowler. Mashal Plastic Tigers still require 33 more runs of 17 deliveries. The difference between the runs required and balls remaining is increasing as ever. As I mentioned, Sumya Gladiators have taken many matches down to the wire, and this is no less than a nail biter. The new batsman is Numan Chawla. He's on strike. This time hitting it straight. Has he found the gap? No, the fielder at long off is going to cut that one off. Just a single added. Good piece of fielding down there at long off. It was flighted by Mohammad Bilal, inviting the new batsman Numan Chawla to play that big stroke. He hit it straight, and it was fielded down there at long off. This time Mubashir Anwar smashed that straight to long on. Slight misfield will allow the batsman to go back for the second run. Poor fielding effort this from Sumya Gladiators fielders. They need to maintain this pressure on the batting side. 15 balls remaining, 30 runs to get. Good spell this has been so far by Mohammad Bilal. This time again, played it wide down to long on. Fielded by the fielder at deep mid wicket. Just a single. The singles won't hurt the Sumya Gladiators. Good spell this has been from Mohammad Bilal so far, picking up 2 crucial wickets, including that one of Munibur Rahman. This time again flighting it down. Again played it wide of the long on fielder. Another fumble. Just a single though. Still one more ball remaining in the 18th over. 28 runs required. 13 balls to get. Mubashir Anwar is on strike. He has faced 14 deliveries so far. This time he has smashed it straight to the deep mid wicket fielder. A fumble will allow the batsman to go for another second. These runs should be stopped at this stage of the match. 18 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 112 for 5. कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट। So after a very long discussion, the youngster Umar Imran has been handed over the responsibility to bowl the penultimate over of this game, the 19th over. Mashal Plastic Tigers still required 26 runs in the last 2 overs. Umar Imran is going to bowl his last over now. The fielder guiding him about the fielding position, asking him to bowl according to his field. Umar Imran, as we all know, flights the ball, invites the batsman to play those big strokes. Can he pick up another wicket? This time it has been swept away by Numan Chawla. And that has been taken in the deep. So Umar Imran has done exactly for what he was brought into the attack. He has picked up a wicket of his very first delivery.
Mashal Plastic Tigers now have lost their 6th wicket. The batsman dismisses Numan Chawla. The umpire is asking the batsman to wait. They will check the replay, whether the catch has been taken safely. In fact, the batsman is walking away. What a decision it was from the fielding side's captain. It was full. It was smashed on the onside. The fielder at deep mid-wicket then completed the catch. So Numan Chawla has been dismissed after scoring just 2 runs. And Mashal Plastic Tigers have now lost their 6th wicket for just 112. They still require 26 runs of the last 11 deliveries. Umar Imran responding beautifully to the responsibility he was handed by the captain of his side. This will boost his confidence for the future. Hopefully he has a bright future ahead of him. The left-arm Chinaman. He looks so confident when he's bowling. The new batsman is Bilal, but he's at the non-striker's end. This time smashed straight down the ground. And this will be a boundary to Mubashir Anwar. Anti-climax to what happened in the previous delivery. Umar Imran sliding it again, looking for another wicket. But Mubashir Anwar was waiting for such length and he absolutely smashed it between the long on and long off fielder. Important boundary this for Mashal Plastic Tigers. 22 runs still more required of 10 deliveries. The required run rate is over 13 runs an over. What can Umar Imran do? This time played on the onside. Will he come back for 2? Nice piece of fielding that deep on the onside. Just a single. So Bilal is on strike now. Umar Imran, maybe not that tall, but he's not an easy bowler to face. His figures might not suggest how beautifully he has bowled tonight. Yes, he has given away 32 runs, but he has also picked up 2 crucial wickets. Only 7 boundaries have been scored in this innings so far and just 1 6. That came out of the bat of Munibur Rahman, who has been dismissed after scoring 59 runs. This time again hitting it straight as an arrow. Will the fielder at long on will cut that one off? Slight misfield and 2 runs completed. Sloppy fielding this from Sumya Gladiators. This just should have been a single. The fielders relaxing their side. There's no need to panic. Still 18 more runs required. 8 deliveries remaining. But most importantly for Mashal Plastic Tigers, Mubashir Anwar is on strike. This time pulled that one away, Mubashir Anwar. Just one bounce straight to the fielder. Just a single. Score moves on to 121 for 6. Last ball of the over coming up. Umar Imran. What a night he had with the ball. Yes, he has given away 36 runs, but he has picked up those crucial wickets. Bilal now is on strike. Last ball coming up. Can he manage to find the boundary, or will Umar Imran strike with the final ball of his spell? This time bowling it wide. The batsman going for the single. There is a run out opportunity at the bowler's end. There has been an appeal. And the umpire has referred it to the third umpire. Umar Imran bowling it wide. The batsman was clever enough not to play that shot. And then there was a direct throw at the bowler's end. Not out. Extra run and a single has been added to the total. 15 runs required. 7 balls remaining.
This time away hit on the onside. Just a single. So 19 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 124 for 6. Still need 14 more runs to win. Quite an eventful over this one for Umar Imran. He picked up a wicket but also gave away some runs. Six balls to go, 14 runs to get. Who is going to bowl the final over? Will they finally win against Sumya Gladiators in this Gulmohar City Presents Youth Friendship League? Or will they go down winless in this tournament? Remember, they haven't won a single game in this tournament. They managed to tie a game against Burj Builder Hawks. Seems like Alam Bhimani is going to fall the last over. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफिजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBC से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर,
जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आप बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। So the play has finally resumed after the slight delay. Last over remaining. Still 14 runs required by Mashal Plastic Tigers, who is going to bowl the final over. Crucial stage in the game. Another match has gone down to the wire. Another nail-biting competition between Mashal Plastic Tigers and Sumya Gladiators. 14 runs required to the final over. Looks like Alam Bhimani is going to bowl the final over. Bilal is on strike. Went for a big shot, misses. Pressure on the two batsmen out there. Dot ball. Mubashir Anwar. He has started this over with a dot delivery.
14 runs to get, 5 balls remaining. What a contest we are witnessing. This time again, went for that big shot. Just another single down to long off. In fact, they are coming back for a second run-out opportunity. And has there been a run-out? Bilal has been dismissed. More importantly, just 1 run added. The important thing for Mashal Plastic Tigers is that Mubashir Anwar is still on strike. It was a good throw from the long off fielder. The bowler collected it and caused that run out. So with that, Mashal Plastic Tigers have now lost their 7th wicket for 125. They still require 13 more runs of the final 4 deliveries in this game. Affan Imran is the new batsman in. Alam Bhimani. Big responsibility on his shoulders. This time went for that big shot. Mubashir. Just a couple added to the total. They still require 11 runs in the last 3 deliveries. Alam Bhimani needs to hold on to his nerves. He cannot give away any boundary at this stage. This time again, another dot ball. It wasn't gathered by the wicketkeeper. Just 2 more balls remaining, 11 runs required. Will they register their first victory, Sumya Gladiators? This time he has bowled him. Alam Bhimani picking up another wicket, another crucial wicket, that too of Mubashir Anwar. He was looking to slog it on the onside, only managing to miss the ball, and the ball crashed onto middle stump. Alam Bhimani has surely sealed the deal now for his side. Last ball remaining. 11 runs required. Alam Bhimani. What a wonderful last over he has bowled. Shayan Khalid is on strike. And as long as this is a legitimate delivery, Sumya Gladiators will register their first win in this tournament. This time smashed down the ground, but it will just be a single. And with that, Sumya Gladiators have now won this competition. Mashal Plastic Tigers could only manage 128 in their allotted 20 overs. At one stage, they were looking settled to chase down the target. As we saw Munibur Rahman scoring 59 runs, crucial runs in this innings. Asad Asif couldn't pick up a wicket. Mohammad Bilal picking up 2. So did Umar Imran and Tahar Salan, and Alam Bhimani bowling that crucial last over, defending those 14 runs beautifully. So after being put into the bat, Sumya Gladiators earlier only managing 137 in their allotted 20 overs. Mohammad Maavia scoring crucial 65 runs. Shayan Khalid picking up a 4-wicket haul and also a hat-trick. In reply, Mashal Plastic Tigers could only manage 128. Munibur Rahman scoring 50. Tahar Salan, Mohammad Bilal and Umar Imran all picking up 2 wickets each. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk।
महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका
جو آپ کے بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے. گل مہر سٹی کراچی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے. اپنا پلاٹ بک کرنے سے پہلے ایک بار سائٹ وہ وزٹ کریں. تو پھر چلتے ہیں سائٹ پر. آئیے. جی میں اس وقت موجود ہوں گل مہر سٹی کراچی کی سائٹ پر، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے جو اس پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور ہاں آپ چاہیں تو سائٹ آفس میں بھی کر سکتے ہیں. یہاں موجود پروفیشنل عملہ اس پروجیکٹ کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم وقت موجود ہیں. تو آئیے آپ بھی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیں اور ادائیگی 5 سال کی آسان ماہانہ قسطوں میں اپنے گھر کے خواب کو اب حقیقت بنائیں. مزید تفصیلات آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.gulmohargroup.com.pk. مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانا بس ایک خواب ہے. کیا یہ خواب حقیقت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس خواب کو حقیقت کا رنگ دے رہا ہے گل مہر سٹی کراچی. ایک ایسا رہائشی پروجیکٹ جو ڈیولپ ہو رہا ہے صحت مند ماحول کے لیے، ایک گرین سٹی کے کانسیپٹ پر، جہاں آپ اور آپ کی فیملی ایک پرفضا مقام میں زندگی گزار سکتے ہیں. کراچی حیدرآباد M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پہ واقع روڈ فیسنگ پروجیکٹ، جو کہ آپ کو مہیا کرتا ہے جدید ترین سہولیات سے آراستہ معیار زندگی. اور ہاں، اس کا Welcome to the post-match presentation ceremony of this 12th game in Gulmohar City presents Youth Friendship League. Another nail-biting contest, another final over finish. Finally, Sumya Gladiators managing to win in their last game of the group stage. First of all, I would like to invite the losing captain Anas Mustafiz to have few words. Anas, ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا بہت آسانی سے میچ جیت جائیں گے جب منیب الرحمان بیٹنگ اس پہ تھے، لیکن بیچ میں ان کا ساتھ نہیں دیا کسی بیٹسمین نے اچھے طریقے سے، جو ایٹ دی اینڈ آپ کے رن ریٹ ریکوائرڈ رن ریٹ بہت آگے بڑھ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ الحمدللہ اچھا میچ ہوا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پارٹنرشپ مسنگ تھی میرے حساب سے. اگر وہاں پہ جب منیب بھائی کھیل رہے تھے اس ٹائم پہ اگر کوئی اچھی پارٹنرشپ لگ جاتی اور ان کو تھوڑا سا سپورٹ مل جاتی، کوئی ایک پلیئر ان کے ساتھ اچھا چلتا رہتا، رنز بنتے رہتے، اسٹرائک روٹیشن رہتی، تو کچھ مطلب رزلٹ ڈفرینٹ ہو سکتا تھا، ہماری فیور میں آ سکتا تھا. لیکن منیب بھائی نے پھر بھی ماشاءاللہ سے ایکسیلنٹ بیٹنگ کری اور میچ کو اتنا اینڈ تک لے کے گئے، جس کی وجہ سے میچ اتنا کلوز ہوا. اور ساتھ میں سامنے والی ٹیم کو بھی جو ہے وہ میں ضرور ان کو جو ہے وہ مطلب کہوں گا کہ بہت اچھا انہوں نے ایفرٹ کیا. ان کی فیلڈنگ ایکسٹراڈنری تھی، شاید وہ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے ان کی ٹیم، اور جس طریقے سے ان کی فیلڈنگ تھی، میں اپنے ینگسٹرز کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہونا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طریقے کی فیلڈنگ ہم اپنے میچز میں کریں تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو. میرے خیال میں دونوں کی اینڈ سے بالنگ اور بیٹنگ اچھی رہی ہے. کچھ تھوڑا سا پچ ڈیفیکلٹ تھا، لیکن ان کی فیلڈنگ ہم سے زیادہ پلس تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ایکسٹرا رن لینے سے روکا اور میچ میں جو ہے وہ ڈفرینس نظر آیا وہ. اچھا انس، پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھا بالنگ ایفرٹ بہت اچھا تھا. مصطفیٰ موسیٰ نے 6 وکٹ چٹکائے تھے اور ہیٹرک بھی لی تھی. آج شایان خالد نے بھی 4 وکٹ لی اور اس میں بھی ہیٹرک انہوں نے لی. تو اوور آل بالنگ یونٹ سے ہم کافی خوش رہیں گے. ویسے جی بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے تمام میچز ہی لو اسکورنگ ہوئے ہیں، تو اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی میری ٹیم کی بالنگ لائن کو جاتا ہے. اور اس کے یہ تو شایان خالد جیسے آپ نے نام لیا، یہ تو بالکل ینگ ہیں اور ماشاءاللہ جس طریقے کی پرفارمنس ان کی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سینئرز ہیں ان کو بھی تھوڑا کریڈٹ دینا ضروری ہے، کیونکہ ان کی سپورٹ ہوتی ہے اور اس سپورٹ سے اور ٹیم اوور آل ٹیم جو ہے وہ اپنے بالرز کو سب کو بیک اپ کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریزلٹس آتے ہیں. چلیں انس، اب کا بھی ایک اور میچ رہتا ہے لیگ سٹیجز کا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ شاید فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر جائیں. تو کچھ امپروومنٹ کرنا چاہیں گے اپنی کسی ڈپارٹمنٹ میں آگے میچز کے لیے؟ نہیں، بالکل امپروومنٹ تو جو ہم نے میچ کھیلا ہے اسی سے غلطیاں سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ریکور کر کے آئیں. چلیں انس، بیسٹ آف لک فار دا ریمیننگ ٹورنامنٹ. ناؤ دا وننگ کیپٹن حارث الطاف. حارث 4 میں سے 3 میچ پہلے ہارے، لیکن وہ بھی بہت کلوز گئے. ایک میچ ٹائی کیا اور فائنلی آج اب آخر میچ بہت کلوز اس میں جیت ہی گئے. کیسا فیل ہو رہا ہے؟
سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آج جیت گئے. کافی دیر کر دی مہربان آتے آتے. لڑکے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے. ٹیم اچھی تھی, کلک نہیں ہوئے. کچھ میرے سے پرفارم نہیں, میری بھی غلطی ہے, کیپٹن لیڈ نہیں کر سکا. کچھ غلطیاں تھیں. لڑکوں نے پرفارم آخری میچ میں کیا, جان ماری. لڑکوں نے بولا آج میچ گڈ نوٹ فنش کریں گے, کیا. عمر عمران جو چھوٹا ہے ہمارا یوتھ کا, یہ مطلب انڈر 12 یا انڈر 14 ہے میرے خیال سے. اس کی بالنگ سب کے سامنے ہے. اچھا, محمد معاویہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت کروشل اننگز انہوں نے کھیلی بیچ میں آ کے اور اینڈ تک کھڑے رہے, کافی اچھا اسکور آگے لے گئے, ورنہ ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ 115 120 تک سمٹ جائے گی آپ کی باری. معاویہ آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کر گیا, اس کا حمزہ نے 2 چھکے مار دیے, اچھا کر گیا. بلال نے اچھی سپورٹ کر دی اس کو. اوور ٹیم گیم تھا. معاویہ کی اننگ بہت اچھی تھی. ہم 135 کرے, ہم کو آگے 135 بھی ہم بچا سکتے ہیں. یہ اگر ہم پہلے میچوں میں کرتے شاید ہماری پوزیشن آج دوسری ہوتی. اچھا, عمر عمران چھوٹے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی. پینلٹیمیٹ اوور آف دا گیم جو ہوتا ہے 19 اوور آپ نے ان سے کروایا, بہت کروشل ہوتا ہے. اس وقت اگر 2-3 باؤنڈریز لگ جاتی تو میچ آپ کے ہاتھ سے جا سکتا تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے وکٹ نکال کے دیا آپ کو. بالکل رس صاحب, میں نے عالم سے ہٹا کے بال اس کو دیا, آپشن نہیں تھا میرے پاس کہ کرتا کیا. اس کو بول دیا, اس سے دل بڑا کیا, بچا کر بال. میرے پاس ہارنے کے لیے کچھ تھا نہیں, ہاریں گے یا جیت جائیں گے. اس نے میچ بنا کے میں دے دیا, 13 رن دے دیا آخری میں, اس نے عالم نے بچا لیے. بہت اچھی بال کی اس نے. بیسٹ آف لک, انشاءاللہ اگلے ٹورنامنٹس میں آپ اچھی وہ کریں گے. Now the prize distribution ceremony, there is a special award for the young Umar Imran of 2,000 rupees. Umar Imran picking up those 2 crucial wickets, bringing his team back into the game. Now the award is for the best bowler of the match. It's a gift hamper from Me Body Spray and a free meal voucher from Biryani Wala, and it's go to Shayan Khalid for his 4-wicket fall, including a hat trick. The next award is for the best batsman of the match, and it's a 1,000 rupees cash voucher from Debonair Saloon, and it's go down to Munibur Rahman for his 59 runs. The next award is for the cool player of the match, and it's a gift hamper by Medicam and a free meal voucher by Penny Pizza. It goes to Tahar Salan. The final award for tonight is for the man of the match, and it's a gift hamper by Admiral, a suit by Al Zuhaib, and a 2,000 rupees from Gul Mohar, and it goes to Mavia for his brilliant batting. Mavia is going to get another cash award of 2,000 rupees by Mayman Stars for his man of the match performance tonight. Mavia, if you can have few words. جی بیچ میں آپ کی وکٹ تھوڑے زیادہ گر گئے تھے, لیکن شروع میں تھوڑا سا آپ سلو کھیلے, پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اننگز کو اچھا پیس کیا اور پھر اسکور 137-38 تک لے گئے. تو کچھ سوچ کے آئے ہوئے تھے یا پھر بیٹنگ کس طرح؟ پہلے تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیا تھا, لیکن اس کے بعد جس طرح وکٹس گری ہیں اس کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ پہ لے کے جانا پڑا, ورنہ ہماری ٹیم 12-13 اوور کھیلتی. تو الحمدللہ اللہ نے ساتھ دیا, اچھی بلے پہ بال آ رہی تھی. تو الحمدللہ ہم نے پلان 150 کا کر لیا تھا 15 اوور کے بعد, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ میری وکٹ گری اور پھر کوئی 2 وکٹ گر گئی. پورے اوور نہیں کھیل پائے, لیکن 138 اس وکٹ پہ اچھے تھے کیونکہ وکٹ بہت سلو تھا. اچھا, اگر اینڈ تک کھڑے رہتے تو آپ کیا لگ رہا تھا 150 تک سکور لے جائیں گے, کیونکہ آپ تھے اور پھر بیچ میں حارث الطاف نے آ کے 3 چھکے لگائے تھے, تو وہاں سے آپ کے مومنٹم تھوڑا بلڈ ہوا, رن ریٹ تھوڑی 6 سے اوپر گئی.
जी ये था कि 150 हो जाएंगे, क्योंकि हमजा ने आके जिस तरह स्टार्ट दे दिया था आके, तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट हो गया था, तो हमारा यही प्लान था कि 150 रन हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। चले माविया, बहुत अच्छा खेले, इंशाल्लाह आगे के टूर्नामेंट्स में इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे आप और अच्छा बैटिंग करें. That's it from the presentation ceremony. Will be back for the next game. Till then, Allah Hafiz. layout plan और architectural work